So today you have to do two practicals. Okay, first I'll show you. So as you know that the last internship class we discussed about TensorFlow, how it works, how to install it, right? And what are the use cases of TensorFlow? Now we'll see how we can implement this, how to utilize its powers, right? The first practical is a simple one, that is TensorFlow calculator and Tensor Playground. Okay, तो फर्स्ट हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है? और इससे आप लोगों को टेंसर्स के बारे में नॉलेज मिलेगा कि हाउ टेंसर्स वर्क। Okay, मैं पहले भी बोला हूँ टेंसर्स क्या है, एक आप मल्टी डायमेंशनल एरे के जैसे समझ सकते हो। दिस इज लाइक ए मल्टी डायमेंशनल एरे। So first task is I just said you need to create a calculator, right? So you have to create two tensors. You can see here a 10, 20, 30, 40. यहाँ आपको ये क्या दिख रहा है? This is a kind of list. समझ में आ रहा है? But जब हम टेंसर फ्लो के साथ काम करते हैं, हर एक को टेंसर मान के चलते हैं, एंड टेंसर इज नथिंग बट ए मल्टी डायमेंशनल एरे और कंटेनर, ठीक है? देन B2458, और जो operations we have to do like addition, subtraction, multiplication, division, mean, maximum value, minimum value and matrix multiplications। तो इसको करेंगे कैसे हम? आप लोगों को मैं एनाकोंडा में काम करने के लिए भी बोला था, बट obviously as I will repeat the same thing, if your system configuration is not that strong enough, you go for the collapse, ठीक है? तो हम collapse में काम करेंगे। So for the time shortage, I have already included the program here. Let's go one by one line of code. तो first हमें क्या करना पड़ेगा? Import TensorFlow और STF, क्योंकि हम बार बार TensorFlow तो लिखेंगे नहीं, तो हम shortly TF लिखेंगे। तो import TensorFlow as TF, aliases, right? उसके बाद हम क्या करेंगे? टेंसर को क्रिएट करेंगे। अब ये वैल्यू से समझ में आ रहा है, दिस वैल्यूज आर व्हाट? दे आर कांस्टेंट। Sorry. So we'll create two tensors A and B. A कैसे create कर रहे हैं हम? TF dot constant and this values 10, 20, 30, 40 जैसे दिया है लिस्ट वही, ठीक है? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेंसर में, और ये टेंसर क्या है हमारे लिए? A। Then similarly B is equal to TF dot constant 2458। अब A and B बन गया टेंसर्स। अब इसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं। एडिशन is assigned tf.add ab, subtraction tf.subtract ab। ये सारे functions TensorFlow में define है, you just need to use them, you come include here and use। ओके देखो यहाँ पे आप जब जैसे ही माउस कर्सर लेके जाते हो, यहाँ आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, राइट? सिमिलरली आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फंक्शन है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ए कॉमा बी, डिवीजन के लिए टी एफ डॉट डिवाइड ए बी। ये तो हो गया ऑपरेशंस। आप स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस जैसे मीन, मीन वैल्यू टी एफ डॉट रिड्यूस मीन, ये फंक्शन जो यूज कर रहे हैं ना रिड्यूस मीन, इससे हमें मीन मिलेगा। दीज आर फंक्शंस दैट वी हैव इन आपका टेंसरफ्लो। सो ये इंफॉर्मेशन जैसे कि आप देख सकते हो, ये फंक्शन का बारे में पूरा लिखा हुआ है। def reduce mean or input transfer, x is non, keep dimensional, name non। and ये क्या क्या है values you will get if you, unless keep dimension is true, the rank of a tensor is reduced by 1 for each of the entries in axis। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। सिमिलरली हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए रिड्यूस मैक्स दैट पर्टिकुलर टेंसर a, minimum value reduce mean a। now we need to display the results, right? So for that we have a print function and this a dot numpy। हाँ, यहाँ पे मैं I am continuing with from the earlier program where I have already included this numpy। okay, so a dot numpy, b dot numpy, and then addition, addition numpy, subtraction numpy। so जितने भी ऑपरेशन है, multiplication, division, mean, maximum, minimum, you just add it by the membership operator dot and followed by numpy। ठीक है, got it?
तो ये बन जाएगा आपका एक सिंपल सा कैलकुलेटर। हमने कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ TensorFlow. So now you got to know that how we keep the values in Tensor. Okay. Now here you have to do something that I have specified here, like इस देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ओके, एक्सप्लेनेशन में लिख के रखा है। अब अभी आपको जो करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू देयर इज अ चैलेंज फॉर यू। ये जो टेंसर हमने बनाया था टीएफ डॉट कॉन्स्टेंट 10 20 30 40, यू चेंज इट टू दिस। ठीक है, जो 10 20 30 40 था, हमने इसको चेंज कर दिया से 1 2 3 4। ओके, नाउ इससे क्या होगा? यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू हैव टू टेल मी द आउटपुट इन दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप ग्रुप। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से बोल रहा हूं। अर्लियर वी हैव टेकन ए इज इक्वल टू टीएफ डॉट कांस्टेंट 10 20 30 40, दैट वैल्यू टेंसर बनाया था। अब a is assigned tf dot constant 1 2 3 4. You have to tell me what actually we are doing. What is the shape of the tensor? Tensor का shape अब क्या बन जाएगा? Shape पूछ रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा what is the dimension now, right? Then what happens now when a is multiplied by some another matrix? और एक मैट्रिक्स ले लो, अब उसके साथ मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। दैट मैट्रिक्स यू कैन टेक बाय योरसेल्फ। Now, again, a simple question you have to answer: how this tensor you find as a different one from the our earlier normal Python list? Python जो list है उससे ये जो tensor है कैसे different है? You have to answer this question, this questions, this observation. You let me know through your handwritten answers. Now let's come to the next practical, next task actually. We need to train a neural network that will predict the house prices. ये तो पूरा important है, क्योंकि कोई भी जगह में हम जब हाउस प्राइस प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो उस जगह का लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली, देन हाउस साइज, नंबर ऑफ बेडरूम्स, कितना एज का है, कितना ओल्ड है, बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू फाइंड आउट द और प्रेडिक्ट द हाउस प्राइस। अब यहाँ हम कैसे करेंगे? पहले डेटा लेंगे, उससे मॉडल क्रिएट करेंगे, मॉडल को कंपाइल करेंगे, देन ट्रेन दैट न्यूरल नेटवर्क और मींस द प्लानिंग बेस्ड मॉडल, then we will evaluate and then we will finally predict. This will be the workflow. Okay, and this will follow the standard keras model development process that I have described in my class. तो पहले हमने क्या किया? लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया। सेकेंड, हमने डेटा सेट बनाया। यहाँ पे यू कैन सी दैट आई एम क्रिएटिंग वन रैंडम डेटा सेट, राइट? सो 42, you know, by default we always used to take 42, but that is not mandatory. You can take anything, but 42 nowadays become a magic number for the data science people. They all use it, right? और इसको क्यों यूज करते हैं मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूं। सो नाउ हाउस साइज को डिफाइन किया, np डॉट रैंडम रेंट इंटीजर 500 3000 200। बेडरूम्स डिफाइन किया, np dot random rent int 1 6 200, then is 1 30 200। then house price को हमने यहाँ पे डिफाइन किया 5000 into size plus 2 this 2 lakhs into bedroom minus 1 मैंने 10,000 into एज, क्योंकि एज जितना बढ़ जाएगा उससे घट जाएगा, दाम जो है कम हो जाएगा, राइट? प्लस np डॉट random डॉट नॉर्मल फॉर दिस पार्टिकुलर डेटा सेट। ओके, ये this price I am including like this. You can change it to better reflect the price. Okay, then we have created one input data with size, bedrooms, as here the feature one will be what? Size ही होगा, feature one size one होगा। Just a minute. Yes, size feature one. Feature two will be the number of bedrooms. Then feature three will be
एस, इन तीनों के ऊपर ही प्रेडिक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको फीचर मान के चल रहे हैं। Got ठीक है। देन ये y इज इक्वल टू प्राइस मीन्स इसी को ही हमें प्रेडिक्ट करना है। उसके बाद हम नॉर्मलाइज करेंगे जो डेटा था ना, वी normalize the value. I told you na, sometimes we normalize the value so that the model can be trained properly and the values rise in a particular range. And उसके लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया, x minus x dot mean, x is divided by x, STD, standard deviation. So this will standardize the input features because size value will be like in thousands. Bedrooms value will be very small, 1 to 5. एक दो तीन चार, 2 BHK 3 BHK is like that, right? Age can be the values from 1 to 30. So ये अगर हम इसको नॉर्मलाइज नहीं करते तो साइज बाकी दो जो फीचर्स है उसको डोमिनेट करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि साइज का वैल्यू बड़ा है। So we have now normalized it. Now all lies in a range. Because this line is very important. Different scales can make a neural network training more difficult. इसीलिए हमने न्यू इस डेटा को नॉर्मलाइज किया। देन वी बिल्ड नॉर्मल केरा सिक्वेंशियल मॉडल, राइट? आप देख के समझ सकते हो कि मॉडल tf डॉट केरा सिक्वेंशियल, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर जो है उसमें न्यूरॉन डिफाइन किया है 64। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने लिया है ड्रिलू एक्टिवेशन फंक्शन, एंड जो शेप है फिशर्स 3 लिया है। देन सेकेंड लेयर में मैंने 32 न्यूरॉन्स, देन एक्टिवेशन फंक्शन रिलू यूज किया है, और लास्ट में आपका आउटपुट लेयर 1। तो 3 इनपुट फीचर्स के साथ 64 न्यूरॉन्स में गया वैल्यू, देन उससे जो आउटपुट मिला वो 32 न्यूरॉन्स में गया सेकेंड हिडन लेयर, एंड अल्टीमेटली फाइनल 1 आउटपुट न्यूरॉन। ठीक है। So this is suitable for because the model follows only a simple linear stack of layers. Then हमने मॉडल को कंपाइल किया। इस कंपाइलेशन प्रोसेस में आपको पता होगा हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिमाइजर, and we define also loss matrix. So as usual I am using Adam optimizer, MSE जो loss function यूज कर रहा हूँ, और MAE evaluation matrix. Okay, और regression MSE MAE are commonly used, जो मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है। So this TensorFlow or Keras always supports the selecting loss function according to the predictive model. Now next हमने मॉडल को ट्रेन किया। हिस्टोरी इक्वल टू मॉडल डॉट फिट, एक्स और वाई का डेटा जो है फिट किया। इपॉक्स हमने 100 डिफाइन किया, वैलिडेशन प्लेस 0.2, ठीक है, एंड वर्बोस 1। तो वर्बोस 1 हमने रखा है, वैल्यू समझ में आते रहेगा हमें। सो ये मॉडल जो फॉलो कर रहा है फॉरवर्ड प्रोपागेशन, देन लॉस कैलकुलेशन, अगेन देन बैकवर्ड प्रोपागेशन, देन वेट अपडेट। Okay, so that will be repeated for the multiple number of epochs. अब हो गया ट्रेन, तो इसको हमें विजुअलाइज भी करना है। सो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर विजुअलाइजिंग द ट्रेनिंग लॉस। सो प्लॉट जो साइज रखा है 85 लॉस, ट्रेनिंग लॉस एंड देन वैलिडेशन लॉस। इसको हर एक इपॉक लॉग्स एक्स लेवल में हमने रखा इपॉक, एंड वाई लेवल में लॉस। Title हमने रख दिया training and validation loss, then showed it. Okay, we can observe how the loss changes during the training. Then after that ये मॉडल हमारा बन गया। अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, we can predict a new house price, right? So इसके लिए हमने लिया 2000, माने साइज जो है घर का आपका 2000 स्क्वायर फीट का है, 3 बेडरूम है, और 5 साल हो गया है, 5 साल पुराना है। तो न्यू हाउस एनपी डॉट एरे 2000 T5। आई टोल्ड यू ये तो रॉ वैल्यू है, ये रॉ वैल्यू को हम इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको वी विल चेंज इट टू नॉर्मलाइज वैल्यू। ठीक है। तो इसीलिए न्यू जो हाउस स्केलिंग, उसको स्केलिंग ही बोलेंगे, तो स्केलिंग किया हमने, स्केलिंग किया तो उस वैल्यू का जो फॉर्मूला यूज किया है वो सेम फॉर्मूला, न्यू हाउस माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाय एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? देन ये वैल्यू को लेके हमने प्रेडिक्टेड प्राइस इज इक्वल टू मॉडल प्रेडिक्ट न्यू हाउस स्केल। जो प्रेडिक्शन के लिए हमने मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट में न्यू हाउस स्केल माने ये जो करंट वैल्यू है उसको पुट किया, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू प्रेडिक्टेड प्राइस 0 0। समझ में आ गया? तो ये
आपको मिल जाएगा। आप चेंज करके, जैसे मैंने 2000 स्क्वायर फीट लिया है, आओ नाउ यू हैव टू डू इट फॉर से 5000 स्क्वायर फीट वेयर 2 bedrooms are there and age is 7 years। ठीक है, 7 साल पुराना है, 2 bedroom है, और दिस इज से 5000 स्क्वायर फीट। इसके लिए क्या होगा, यू हैव टू शो इट टू मी बाय डूइंग इट। तो मैं फिर से प्रैक्टिकल को दिखा देता हूं हमको। तो पहले हमने क्या किया था, numpy टेंसरफ्लो मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने डेटा को जनरेट किया। ठीक है, np.random.sheet42 हाउस साइज 500 3200। ठीक है, स्क्वायर फीट में हमने डिफाइन किया। देन नंबर ऑफ बेडरूम्स 1 to 6 ये रखा है, मतलब 1 to 6, बट दिस इज द वैल्यू विल बी व्हाट 1 to 5 ओनली। ठीक है, 200 जनरेट कर रहे हैं सभी के लिए। देन एज 1 to 30 लिखा हो, 1 to 39 होगा, और 200 वैल्यूज। देन वी हैव जनरेटेड द हाउस प्राइस। ओके, एज यूजुअल जो फॉर्मूला 5000 इंटू साइज। ओके, then 2 lakhs, then this bedroom, and then minus into 10,000 into S, then NP random dot normal 0 1 lakh comma 200। तो ये वैल्यू हमारा मिल गया प्राइस। देन हमने साइज बेडरूम एज का ये स्टैक बना लिया, प्राइस वाई में रख दिया, और एक्स को नॉर्मलाइज किया। एंड देन मॉडल जो मैंने बोला था 64 न्यूरॉन्स, रिल्यू एक्टिवेशन फंक्शन, 3 फीचर्स को लेके बना है। ये फर्स्ट हिडन लेयर, सेकेंड हिडन लेयर में 32 रिल्यू एक्टिवेशन फंक्शन, एंड लास्ट वन में ओनली 1 न्यूरॉन। मॉडल को कंपाइल किया हमने, एटम ऑप्टिमाइजर यूज किया है, एमएसई लॉस फंक्शन एंड मैट्रिक्स एमएई। एंड देन जो है हमने ट्रेन किया। देखो, ट्रेनिंग टेक्स टाइम्स एक्स वाई इपोक्स 100 and validation plate 0.2, verbose 1। verbose 1 दिया है, इसलिए आप you can see here that the values are showing here how the training is going on with the different values। okay, ultimately हमें जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, how much time it takes, 13 seconds, because we are taking only 100 epochs for this 200 data, so it is taking less amount of time। Then we try to plot the validation and training loss diagram, so you can see this is the training and validation loss diagram, right? तो मुझे ये ग्राफ देख के बताओ, दिस इज द ग्राफ। ओके, ये ग्राफ देख के बताओ क्या हो रहा है। ट्रेनिंग का ब्लू and validation का this orange color। So what do you see here? And my other question is that is overfitting happening here? Tell me by writing it properly। Okay, then house price 2000 can be predict here for 3 bedrooms, right? And 5 years old, and then we keep the value in a normalized form, and ultimately we got the predicted price as, say, you can see here 80, how much it given 1 2 3 4 5 8 lakhs 27,600। तो आपको क्या करना है, यू कैन चेंज द वैल्यू। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया 5000 स्क्वायर फीट, 2 bedrooms and 7 years old। So let's see what will happen, what will be the predicted price। the predicted price यहाँ पे ये आ रहा है। So for that you have to do your practical for the means value, new value, say 6000 square feet, 3 bedrooms are there, 10 years old। क्या मिलेगा वो मुझे बताना है। तो इतना ही करना है आज के लिए, and any doubt you just ask me। Okay, don't leave it। Thank you।